You Okay, I can talk about that. yes, so I'll be wait for the questions और आप questions करते रहें. कहीं से भी अगर मुश्किल हो तो fax कर दीजिए. Please continue. Sure. तो ये जो हम लड़ाई की बात कर रहे थे जिसमें अलोका दी ने कहा कि लड़ाई मेनली डिसेबल्ड लोगों ने लड़ी है, और ये लड़ाई अब ऐसे टाइम पे पहुंच चुकी है जहाँ पे मान्यता अधिकारों की है, फुलफिलमेंट शायद नहीं है, और उस फुलफिलमेंट की तरफ हमने बढ़ना है. तो आप और मैं क्या कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट कि ये फुलफिलमेंट हो. uh, हमारे को अगर हम स्लाइड की तरफ जाएं तो हमारे को 5 चीज़ें करनी है. अभी आपको स्लाइड दिखेगी. पहली चीज़ हमने करनी है कि हमने पार्टिसिपेशन के गैप को कम करना है. वी हैव टू रिड्यूस द पार्टिसिपेशन गैप. दूसरी हमने करनी है कि हमें स्टिग्मा और एक्सप्लॉयटेशन को कम करना है, ख़त्म करना है. तीसरी चीज़ जो हमने करनी है कि जो इंक्लूशन का गैप है हमारी प्लानिंग में, हमारे वे ऑफ डिलीवरिंग ऑफ प्रोग्राम्स में, वो इंक्लूशन के गैप को हमें कम करना है. फिर हमारे को जो सर्विसेज में गैप है कि डिसेबल्ड लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक सर्विसेज नहीं पा सकते हैं, उन सर्विसेज के गैप को कम करना है. और तीसरा फिर हमने टेक्निकल रिसोर्सेज जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, उन गैप्स को पूरा करना है. तो ये जो 5 चीज़ें हमारे को पूरी करनी है, इसमें विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह की मेहनत करनी है. जैसे आरसीआई को ह्यूमन रिसोर्स के गैप को देखना है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्स के गैप को देखना है, टेक्निकल रिसोर्सेज प्रोफेशनल्स को देखने हैं, पार्टिसिपेशन का गैप. एक बहुत अहम बात जो मैं पिछली प्रेजेंटेशन में फोकस नहीं कर पाया था कि राइट्स, 2 तरीके के राइट्स होते हैं, और एक जो राइट्स होते हैं उसको कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, टू डिटर्मिन माय फ्यूचर, राइट टू कि मैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करूं, मैं वोट कर सकूं, मैं अपनी सहमति असहमति व्यक्त कर सकूं. वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं. दूसरे होते हैं सोशो कल्चरल इकोनॉमिक राइट्स. तो दोनों तरीके के राइट्स पूरे होने बहुत ज़रूरी हैं. अभी तक इंडिया में डिसेबल्ड लोगों के साथ ज़्यादातर सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक राइट्स की हिस्ट्री रही है. सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पीछे कुछ, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं. हमारे एक कुलीग जावेद हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने पीछे एक इलेक्शन लड़ा, पर वो अपनी वो एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट किए वो नहीं है. जब हमारी वोटिंग मशीन्स में ब्रेल उपयुक्त हो जाएंगी, जब हमारे हर वोटिंग स्टेशन में रैंप्स बन जाएंगे, और जब हियरिंग इम्पेयर्ड को जो अकोमोडेशन चाहिए वो मिल जाएंगी, तो हम मानेंगे कि हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हमारे को मिल रहे हैं. तो एक बड़ी लड़ाई तो पार्टिसिपेशन में ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की है कि कैसे हम सिविल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ जुड़ सकें. जो बाकी मार्जिनलाइजेशन वाले जो ग्रुप्स हैं, औरतें हैं, जो बाकी ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी ने मार्जिनलाइज कर दिए हैं, वो कैसे हमारे हकों की लड़ाई लड़ें और हम कैसे उनके हकों की लड़ाई लड़ें. जब हकों की लड़ाई जुड़ती है तब वो हकों की लड़ाई बड़ी बनती है. सो बट as an individual, what we need to do is that whatever we might be doing, we have to be aware, at least give the acknowledgement of the rights of people with disability. चाहे हम डिसेबल्ड हैं तो बाकी लोग जो डिसेबल्ड हैं उनके राइट्स को भी देखना है, बाकी लोग जो हैं उनके राइट्स को भी देखना है. It cannot be that as people with disability or as a group of people with disability or activists involved in the movement of people with disability, we cannot say that we will not acknowledge other people's rights. Disabled people have to acknowledge each other's rights as well and other people's rights as well. So that's our responsibility as well, that while our rights are acknowledged, we need to acknowledge other human beings' rights as well. So this is a very, very important concept, and we need to stay with this. Let me go into first looking at what should the I think that I'm going to focus on the human resource gap because all of you are becoming professionals,
And it is not just the responsibility of RCI to make sure that the professionals are adequate. It's all our responsibility, who are the human resource for the disability sector. It's our responsibility that we reduce this resource gap. Now, that's where I'm coming in, that you, whatever the level of your functioning might be, कि आप प्राइमरी लेवल केयर गिवर हैं, आप पेरेंट हैं, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि डिसेबल्ड आदमी के साथ काम कर रहा है, आपका कोई भी आप रोल में हो, कोई भी आपकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो, आपने ये मानना है कि आप अपने आप को इफेक्टिव तभी बना पाएंगे जब आप अपने जो वे ऑफ वर्किंग है, द वे ऑफ थिंकिंग है और वे ऑफ ट्रेनिंग है, उसको राइट्स सेंसिटिव बना सकें. If your rights talk about a particular disability in a manner which is not, if your books talk about a particular disability in a manner which is not very helpful, then as a person who's learning that, you still cannot be away from the knowledge that the person with disability is giving you, the knowledge that comes from your experience, that a human being is a human being is a human being. किताबें गलत हो सकती हैं, मानवीय जो अनुभव हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वो गलत नहीं हो सकती हैं. तो किताबों को एक तरफ रख के अगर हम अपने जो सहभाग्यता है उससे जो सीख सकते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू आर गोइंग टू get a human resource that is rights sensitive. I know that most of what is written here is in technical language, which means more to RCI than to the students. But इसमें से एक शब्द मैं पढ़ना चाहूँगा और वो शब्द है multi-tiered. हम different levels पे काम करते हैं. इसका ये मतलब नहीं कोई लेवल ऊपर है कोई लेवल नीचे है. हम डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं क्योंकि ज़रूरतें फ़र्क हैं. तो अगर आप एक प्राइमरी लेवल केयर गिवर हैं जो कि एक विलेज में इलाहाबाद के बाहर काम कर रहे हैं, और अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो उस इंसान के लिए जो आपकी सहायता ले रहा है या जो आपसे सर्विसेज ले रहा है, जो आपकी मदद चाह रहा है या जिसका अधिकार है कि जो आपसे बातचीत कर रहा है, उसके लिए हो सकता है कि दोनों प्रोफेशनल में से ज़्यादा ज़रूरी वो प्रोफेशनल हो जो कि इलाहाबाद के बाहर एक गांव में काम कर रहा है और जिसकी ट्रेनिंग खाली 18 दिन की रही है बनिस्बत वो जो कि 18 साल की ट्रेनिंग लेकर एम्स में बैठा हुआ है. दोनों लेवल्स जब हम बात करते हैं, हमारे को एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जहाँ पे हर लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हो. हर लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को प्रोफेशनल माना जाए, और हर लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो आप अपने आप को प्रोफेशनल मानेंगे और आप अपने आप को राइट स्पेस मानेंगे, तो जो आपका जो इनपुट होगा इनटू द व्हाटएवर वर्क दैट यू आर डूइंग वुड बी मच मोर वैल्यूएबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी दैन अगर आप अपने आप को या तो प्रोफेशनल नहीं मानेंगे या फिर आप अपने आप को मानेंगे कि आप तो छोटे हैं, आपका लेवल छोटा है, आपके उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं हैं. हमारे को प्रोफेसर्स इन डिसेबिलिटी नहीं चाहिए. व्हाट वी नीड इज पीपल इन डिसेबिलिटी हु बिलीव इन पीपल इन विद डिसेबिलिटी. वी डोंट सीम टू बी गेटिंग फोन कॉल्स. तो अगर इस दौरान में कोई फोन कॉल्स, मैं एक, आपने कहा दो राइट्स एंड यू मेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो यहाँ पे डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच इज known as a very very solid and empowering document, there is nothing in the constitution to prevent civil and political rights of disabled people as far as I know, but perhaps the word unsound mind is something that you want to mention because it is a anti-UN convention and that probably interferes with civil and political rights, and I think you are probably going to go on talk about economic, social and cultural rights. Today I'm not going to focus on that. Okay. Tomorrow when I talk about the social impacts of disability, Okay. I'm going to focus on the various rights that are impinged and how to address those various rights. So, I'll wait for tomorrow for that. But you're right कि जो हमारा constitution है इंडिया का, वो हर सिटीजन को एक जैसा मानता है. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि
जो राइट टू फ्रेंचाइज है, जो राइट टू डिटर्मिन वंस ओन फ्यूचर, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो कहीं लिमिट नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू डिग्निटी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू चॉइसेस जो है वो बड़े क्लियरली डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन शब्दों में नहीं है शायद, बट वो बड़े क्लियरली डिफाइंड है। राइट टू लिबर्टी बड़े क्लियरली डिफाइंड है। पर क्या हम डिसेबल्ड होने के नाते से किसी का राइट कुछ ले सकते हैं वापस? उसमें मेरे को अपनी एक दोस्त हैं कॉलिन गोंसाल्विस, उनकी बात याद आती है। वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। वो कहते हैं कि अ ह्यूमन राइट cannot be taken away even if it's infringed. You can only infringe a human right. You cannot take away a human right. मेरा human right तो मेरा मानवीय अधिकार है ना, मैं वो आप मेरे से ले नहीं सकते हैं, उसकी आप अवहेलना कर सकते हैं. You can infringe that right, but you cannot take it away from me. And even in infringement, that right exists. Now, there are some laws in India which, as Alokali was saying, focus on some people, especially people with mental illness or people with mental retardation or some other disabilities, social disabilities like autism. They take away certain rights from them by saying, oh, you cannot do this. Because they have two reasons for doing that. Their intentions are, in their mind, very clear. Either they are protecting the rest of the community from what the person with disability might do, or they are being very parental towards the person with disability. Both the positions of either being the policeman for the society or being the parent of the person with disability, the patriarchal parent of the person with disability, both the positions have been challenged by the convention. And the convention is saying this, and I keep on going back to the convention. I still feel that even if it is early days for the convention, we now cannot talk a different language. Now our language has to change, even if the formal processes take a long time to change. Informal processes like this one need to be informed by whatever we have learned from the convention. So what the convention is saying is that neither for the reasons of the security of the community, because that's based on the myth that a person with disability can harm the community, or for the reasons of good of the person with disability, can you take away their legal capacity. You cannot substitute their legal capacity. They are equal before the law, and that's a very important right, that you're equal. At least somebody somewhere is seeing you as an equal. It's defined in the law that you're equal, that you have as much right to justice as anybody else, that you have as much right to redressal as anybody else, that others have as much right over you for redressal if they think that you've done something wrong. And that right, you have as much right to make decisions for yourself. Those are very, very important things that this legal capacity thing is. They're saying that to be able to exercise that legal capacity, you might need certain support. And it's the responsibility of the government to ensure that that support is provided to you without your asking at times. That support is based on your need and your voicing of your need, but you don't have to fight for that support. And that support is available to you, but nobody can substitute you. Your decisions regarding yourself have to be your own decisions. That's a very important thing. Yes, the point you're trying to make, the difference between assisted decision making and substituted decision making. So in fact, it just reminds me that when we were writing the text for the civil and political rights at the UN, I think in the second or the third meeting, a text was drafted and it said people with disabilities have a right to win elections, etc., etc. And this was very late at night, etc., and we all agreed. Next day we realized that nobody has a right to win elections. You only have a right to stand for elections like everybody else, but the right to win an election is a right of the person voting and not of the person who's standing for election. So that the civil and political rights. There's also a lot of debate about substituted decision making, because we have very often in the case of mentally retarded people and people with mental illness, legal guardians are provided by the state
or choice of parents, choice of people with disabilities themselves, and they decide for you, where you're going to invest your money, what you're going to eat today, what you're going to wear, which institution you're going to go to, whether you're going to be institutionalized for life. So those are decisions that are made for you. Whereas the UN Convention initially talked about no complete autonomy of disabled people, but we also, because of the number of severely disabled, multiply disabled people in developing countries, we made this point about some kind of assistance in case there is even temporarily an impaired decision making capacity. So the question of assisted decision making rather than substituted decision making came in, and that's where this question of how far do we involve legal guardians. And we had a discussion with Poonam Natarajanji, Chairperson National Trust, I think just 3 or 4 days ago, last week, and how the UN Convention may impact on the present laws of the country, and all of that we will be looking at. Now, in view of the fact that we haven't yet received any questions, and maybe people are busy with the Sera. This is in the eastern part of Bengal. Most of the special schools. It's Puja, isn't it? It's Durga Puja. Today is Panchami. Tomorrow is Ashtami, Mahashashti, etc. So we have an option. Or do we want to continue with? I can say 3 more things. Yes. If Please we have go the ahead. time, Yes, I we can do. say 3 more things. One is that I want to talk about something called universal design. It's a very important concept, and this is another way of ensuring that people participate and people have access. And this means that at the designing and the planning stage, structures and processes are designed so that they ensure that all places, tools, structures, processes can be used by all people, not specific. There are no special provisions then. So if, for example, electricity switches have to be put in place, they're put in place at a place where everybody can use them, rather than for them to be put in a place where only some people can use them. If the bolts have to be put, then there is no need for special bolts for special toilets for people with disability, but every toilet has similar levels of bolting and similar sizes, so that there is a universal design. If cars have to be designed, if procurement has to be done, if everything is done in a manner that there is a universal design which looks at everybody's needs and looks at the range of diversity that there might be, and the design tries to fulfill for the majority of people. Design serves the purpose of majority of people, the greater majority, including the diversity, not just the majority by numbers, but majority of the diverse groups that are there. And if the majority of the diversities are recognized, then you have a universal design. That's one thing. तो जितना हम डिज़ाइन के टाइम पे, कोई भी चीज़ हम जब शुरुआत कर रहे हैं उस टाइम पे, डिज़ाइन मतलब शुरुआत के टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि हम एक मैप बना रहे हैं या एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम, ट्रेनिंग, कोई भी चीज़ अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम पहले से सब लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे तो वो सब लोगों तक पहुंच पाएगी. और हमारा डिज़ाइन ऐसा है कि कुछ लोगों तक पहुंच पाए चीज़ तो कुछ लोगों तक ही पहुंच पाएगी. तो ये टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल डिज़ाइन. दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है फिर यूएन कन्वेंशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी भाषा में, और वो कॉन्सेप्ट है रीजनेबल अकोमोडेशन का. तो रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होती है? सीधी सादी भाषा में वो चेंजेस या वो मॉडिफिकेशंस इन द वे वी डू थिंग्स दैट आर डन सो एज टू एनेबल the abilities of a person rather than highlighting the limitations of a person. कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पीठ दर्द है और यहाँ पे बिना पीठ का स्टूल रख दिया जाए तो जाहिर है मेरी पीठ दर्द बढ़ जाएगी. तो मेरी जो रीजनेबल अकोमोडेशन मेरे को इस ट्रेनिंग को करने के लिए चाहिए होगी कि मुझे पीठ वाली कुर्सी चाहिए होगी.
वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है मांगने के लिए। उसी तरह से जो अगर मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ और जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है वो ऐसा है जिससे मेरे हाथ की मूवमेंट लिमिटेड है, वो कीबोर्ड का डिज़ाइन अगर मेरे लिए कीबोर्ड ऐसा बना दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए बनाया जाए क्योंकि सबके लिए शायद वो सहूलियत नहीं होगी, मेरे लिए कीबोर्ड ऐसा बना दिया जाए जो कि लैपटॉप में इस्तेमाल होता है, उस पर मैं हाथ चला सकूँगा, मेरे को पूरी जो नॉर्मल कीबोर्ड डिफरेंट जो सब लोग यूज़ करते हैं उस पे मेरे को हाथ पूरी तरफ जाना पड़ेगा, पर जो मेरा कीबोर्ड हो वो रीजनेबल अकोमोडेशन की तरह से छोटा कीबोर्ड हो तो मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसी तरह से छोटी छोटी रीजनेबल अकोमोडेशन के साथ मैं ऐसा बहुत कुछ कर पाऊंगा, इवन इफ आई एम डिसेबल, मैं ऐसा बहुत कुछ कर पाऊंगा जो आज मैं नहीं कर पाता हूं, पर मेरी करने की सक्षमता है मेरे में, करने की चाहत है मेरे में और करने का अधिकार है मेरे में। तो ऐसे पूरी चीजें जो मेरे को अपने जीवन का पूर्ण करने का मौका देती हैं वो रीजनेबल अकोमोडेशन कहलाती हैं। चाहे वो एड्स एंड एडेप्टेशन हो फॉर डेली लिविंग या एड्स एंड एडेप्टेशन फॉर वर्क हो। सो बट उसमें प्रोसेस को चेंज करना जरूरी है, खाली अडेप्टेशन देना जरूरी नहीं है। अगर आप खाली मेरे को अडेप्टेशन दे देंगे और प्रोसेस नहीं चेंज करेंगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को नौकरी दे दे और पर्सन इन अ व्हील चेयर जिसको आपने नौकरी दी और वो उनका जो सीट है बैठने का वो सेकंड फ्लोर में हो और बिल्डिंग में रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, सिर्फ सीढ़ी है, तो वो नौकरी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मायना नहीं रखता है अगर आपने ये छोटी सी एक रीज़नेबल अकोमोडेशन ना करे कि एक रैंप या लिफ्ट या उनके दफ्तर जो है उसे आप ग्राउंड फ्लोर में लेके आएँ। जितना without the concept of reasonable accommodation also includes undue burden. It should not be an undue burden on the employer or the provider or the whichever is the organization that is making the accommodation. मैंने जानबूझ के I did not talk about the undue burden. Yes. Because undue burden can be used as an excuse not to do anything. And some things do not cost money. Some things do not. Something only require focus and attention. And a lot of reasonable accommodations are only about focus and not about the money. Mm-hmm. And it's very important to continue to remind people that it remains a person's right, even if if an organization cannot make a reasonable accommodation today, it still remains a person's right for that reasonable accommodation to be put in place at some point of time. And in the interim, something has to be done. It does not mean that you exclude the person. So if one reasonable accommodation cannot be put in place because of undue burden, then another has to be thought of, which is of lesser cost and can be put in place and might not be creating as much inclusion as one wanted in the first place, but it still allows the person to be able to do what they want to. So that's why I'm underplaying the undue burden, although the people who design budgets and programs will overplay it. Yes, because that's also in the convention because it's easier to promote. So at this point in time then, what we will do is just discuss what we will discuss tomorrow. I think tomorrow I will start with the definition of impairment, disability and handicap, which is in the WHO format, which is in your syllabus, and I'll quickly run through the different disabilities that are mandated by Indian law, which is your existing syllabus, and then we will go and discuss further Dr. Bhagat's categories of disabilities in not my category. No. As is recognized by people right now. Then tomorrow after that we will be discussing to some extent the psychosocial implications of disability. Sure. We would be discussing, I think we should look at the impact of disability and what it does to the person, the family and the community. So tomorrow we will be discussing the impact on the person, mm-hmm. and then the impact on the family and the community, how treating disability in one manner, what it does to the family and community, and how looking at it from the community's point of view as well. Mm-hmm. How does an inclusive community or an inclusive organization also become a growing organization? Mm-hmm. So what are the advantages of the current way of thinking for the community and the family? One would also try to highlight that in the psychosocial implications of the family and the community the day after. Okay.
सो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस जो नहीं आए उसमें काफ़ी वजह हो सकती है, और हम कल फिर मिलेंगे 2 बजे अगेन विथ डॉक्टर भगत के साथ, क्योंकि कल अच्छा एक बात मैं बता दूं, आपकी सेमेस्टर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो हमने डेट्स तय की है 3rd December टू 7th 8th December, that your first semester examinations and the caregivers examination, or the foundation course in caregiving, उसकी एग्ज़ाम्स the dates have been decided। तो वो जो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है वो उसी में होल्ड किया जाएगा, और कल हम आपको बताएंगे कि कौन सी पेपर कौन सी डेट में होगी। और आपको ये तो जानकारी है, मैंने काफ़ी डिटेल्स भेज दिया है। जो जो केयर गिवर्स कोर्सेज रन कर रहे हैं, आप उनके कैंडिडेट्स को फ़ोटोग्राफ्स भेजिए, 2 फ़ोटोग्राफ्स, ताकि हम यहाँ से एडमिट कार्ड में उनके फ़ोटोग्राफ छपवा के आपको भेज सकें। तो फ़ोटोग्राफ देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर कर सकता है और कोई कौन नहीं कर सकता है। तो ये रही 2 बातें कि एग्ज़ामिनेशन होंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, the first semester examinations for DSE HI, DSE MR, DSE cerebral palsy, sorry, DSE hearing impairment, DSE visual impairment and DSE MR, and बाकी सब तो annual examinations होंगे जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। नेक्स्ट ईयर से शायद सभी पेपर्स सेमेस्टर हो जाएंगे, अभी तक ये डिसीजन पूरी तरह से तय नहीं हुई। और इस वक्त हम ये कह के डॉक्टर भरत को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे तो ये बहुत बिजी साइकाइट्रिस्ट हैं, मगर इनका डिसेबिलिटी फील्ड के साथ इतना लगाव है और इनकी अंडरस्टैंडिंग इतने हैं ज़्यादा है, एंड ही इज़ सो वेरी वेरी फ्यूचर लुकिंग and very clinical in terms of how the processes should be worked out and how we should look at, say, 5 years, 10 years planning from now on. He's also very closely involved in the amendments and giving suggestions to the amendments of the Persons with Disabilities Act. तो इस वक्त हम ये कह के ख़त्म कर रहे हैं, और नमस्कार, और कल फिर मिलेंगे ठीक 2 बजे RCI की नवशिखर चैनल में। नमस्कार।